चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर रिविजन क्लास। आप लोग थे मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस में, एंड हर्ष तो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस में था. So in this class, what will we do is that whatever we have studied in this 4 hour, I will try to make you exam ready. जो भी डिस्कशन करनी थी, what we had to grow as a manager, जो strategy हमें सीखनी थी, majority of the things we have done in our offline classes and also in our other online classes. Now here, the aim of this class is that we revise all 4 units, every important definition, every important formulas and all the questions include करके. तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस हमने अभी पेपर सेट करा है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आप कर सकते हो एंड यहाँ से डायरेक्टली आप इस स्लाइड के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज द ओपनिंग जो होता है ना, दिस इज अ फ्रेमवर्क दैट आपके बिल्कुल ही इंटायर क्लास में, इंटायर सेशन में, वॉट एवर वी आर स्टडिंग, इसमें इट इज जस्टिफाइड, इट इज यूजफुल कि हम कहीं ना कहीं इसी आयरन ट्रायंगल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो before I begin, I want you to forget that you are in an exam revision class for 1 minute. I want you to think as a consultant who has been handled one brief. India has 1.4 billion people. They spend around 1.39% of GDP on health. 55 million people are pushed into poverty by illness every year, you can say accidents, any health related issue. Now, half of the 10-year-old cannot read. At least you can say ki by under the age of 10, it's difficult for them to read and write. Now you have to design a strategy to fix this budget. Your budget is limited, your time is urgent. Now, this is the brief. This course is your answer to that problem. The big problem that we face of in our health related issue, where 55 million people are pushed into poverty by illness every year, and we only spend 1.3% of the GDP on the health. Also, we have a huge number of population under the age of 10 who cannot read, who cannot write. In this situation, you are as a consultant, you have been given a situation. Now to plan that situation, to take your country out of that situation, to answer that problem of health and education, this course is your answer. Okay. And that is like the very basic. Once that is started, I want you to focus on the iron triangle. Iron triangle is the framework that ties all these 4 units together. When you talk about every health education system on the earth, it is trying to balance these 3 objectives only. And I mean every system on the earth related to health or related to education. Look very carefully on the iron triangle on your screen. No system has fully achieved any of all these three. We cannot say that तीनों हो चुका है. But every policy, every model, every innovation, we study in an attempt to get closer to this iron triangle.
Now let's study about the siren triangle. It is very important from your exam point of view. Okay. Not only from your exam point of view, from your general understanding point of view as well. Okay. So we will discuss the corners, what they mean, who chose what corner, because we have discussed unit 4, तो उसके basis पे, and what they gave up. So सबसे पहले we have the first corner, which is equity. So equity means universal access. Nobody is excluded by income, geography or identity. हमने जो फ्रेमवर्क्स पढ़े थे उसमें हमने क्यूबा का पढ़ा था, थाईलैंड का पढ़ा था, उनका जो इन कवरेज है 30 बार स्कीम था, रवांडा का पढ़ा था. सो यूके एनएचएस का हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि उसने ये फ्रेमवर्क चूज करा है, यूनिवर्सल एक्सेस. बहुत ही फेमस एक कोटेशन भी था वहां पे, इफ यू रिमेम्बर, विच सेड लाइक कि if a sick person, if you have failed as a society, if a sick person is denied medical facility um, based on his willingness to pay, or is made to wait in line. So, very similar to that. I'm paraphrasing it. So they focused on universal access. What they gave up, speed, some technological sophistication, techniques. बहुत लंबी lines होती हैं. Still the method you would say is in Thailand little crude. So उस पे हमने करा है. Your second is efficiency. Your second one is efficiency. When we talk about efficiency, the maximum health output per rupees spent, so it should do more with less. Your main here of the strategy should do more with less. This is your efficiency. Which model chose efficiency? Narayana Hridayalaya, Arvindam, Singapore, the M3 model that we have studied. Abhi, we will again revise it in detail. Same equity, what did they give up? जब आप efficiency पे focus कर रहे हो तो क्या छूटेगा? आपकी equity at some margin छूट सकती है, because आप efficiency पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हो. Your third corner is sustainability. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों छूट सकता है, like what little thing it can, because with time it could be taken care of, but initially if you see, जब हमने बात करी थी अरविंदन की भी, जब एफिशिएंसी की बात करी थी, तो सेम इक्विटी एट द मार्जिन्स इट वाज देयर. सो इनिशियली जो नॉन पेइंग कस्टमर्स थे उनको लेंसेज देने में दे हैड डिफिकल्टीज. अभी उन्होंने अपना यूरो लैब कर लिया एंड इट बिकेम एक्सेसिबल टू ऑल, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो मार्जिनल प्रॉब्लम्स विथ, अगर आप एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करोगे तो इक्विटी के साथ में आ सकती है, विच इज not always, but like in under certain some circumstances. Now, when you talk about sustainability, sustainability is financially viable long term without collapsing the public purse. In this, who chose it? Singapore. The 3M model. Arvindam ka cross subsidiary model. What did they give up? They gave up co-payments. They gave up parallel to access to poorest of the poor. So now, have you studied about the Michael Porter's model in strategy? I am sure you have. So Michael Porter's most important insight is a strategy that tries to be everything to everyone is not a strategy at all. Strategy that tries to be everything
to everyone is not a strategy at all. In this context, we will also discuss about market failures, but first let me connect it to the Michael Porter's model. So most important insight, a strategies that try to be everything to everybody is not a strategy. US tried to have some premium quality and market efficiency and no government mandate. Result, highest health spending on the earth. 25 million uninsured people. Life expectancy lower than that of Cuba. Life expectancy of US life expectancy of US is lower to that of Cuba. India has been trying to occupy all three corners of the triangle without being committed to any. And as we discussed, that everything, a strategy that tries to be everything to everyone is not a strategy at all. So, when India is indecisive and it is trying to occupy all three corners of the triangle without being committed to one, this is not a particular strategy, a problem that you are here to solve. The four unit of this courses each answer one question. Why do the market fail? The first unit. What has failed in India? This is preferably your second unit. And then the third unit. Okay. When you come to the third unit, it says who solved it and how. Where when we discuss about Narayana Health, Hridayalaya, Arvindam. Fourth unit is what you can learn from others. So now this is like a course map that I'm giving you for this particular revision class. First unit is why market fails in health and education, that we will just discuss. Theory of public good, externalities, merit good. Okay. Unit 2 is about what India looks right now. The current scenario, public versus private, the PPP model, public private partnership. Unit 3 is how innovators are fixing it. Arvindam, Dr. V. Shetty, NHS, telemedicines, use of AI, web education. How are we fixing that issue? And your fourth unit, what other countries have done, the global lessons and your reverse in innovation. This is your course map. Whatever we will study today will be based on this only. Okay. So it is a 4 hour long class. We will have repetitive breaks for 5 minutes, 10 minutes. I want you to stay because even if अभी तक you had not done any revision या अभी तक के classes में अगर आप नहीं भी थे, but if you attend this class, you will be exam ready. Okay. So let's start with the big question that is there on your screen. Why does market fail? In this, we will also discuss important questions for the exams that we have set up. So this revision class is strictly your based on your course, strictly based on your preparation for the upcoming exams. So
Unit 1 is the foundation. Everything else in this course sets to three ideas: public goods, externalities, and merit goods. Now, these are not abstract economic concepts that you will study here in isolation. They are the reason hospitals exist, why government subsidizes vaccines, why you are inspired, why you are motivated, asked, and mandated to take vaccines, how one thing is consequential to other. कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती है, एक से दूसरा रिलेटेड कैसे होता है. समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज लाइक अ मैप ऑफ द यूनिट. Why education is compulsory? Why market alone will always fail the poorest? Why we, if we are completely dependent on market, will fail as the in that aspect. Key government intervention, why is it important? Let us go through each one of it very carefully. We have discussed these multiple times in the class. Now, probably we are doing it for one last time, and I want you all to be here completely, okay? So that you can have an idea of it, और ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाए. So, public goods has two defining property. First one is it is non-executable. Second one is you cannot stop anyone from benefiting from it. Non-rivaler. Non-executus, once it is provided, you cannot stop anyone from benefiting it, whether they have paid for it or they have not paid for it. Second is it is non-rivaler. One person use it will not reduce its availability for other person. With both properties combined, the market here fails. So for public goods, two very important thing you have to remember, it is non-excludable and it is non-rivaler. Let's discuss it further. What do you mean by non-excludable? Like if you are asked the what is public good and what are their properties. So technical meaning non-excludable का होता है you cannot stop one from benefit it. Example क्या होता है? Street light, national defense. You cannot charge every driver जो रोड पे जा रहा है अगर आपने एक बारी स्ट्रीट लाइट ने लगा दी है तो. If we give you another example, that is from herd immunity. Once 95% of people are vaccinated, even unvaccinated people are now protected. Non-rivaler होता है when one person use does not reduce what is available for other. Sorry. Non-rivaler का मतलब होता है one person use does not reduces what is available for others. A lighthouse beam. The fact that ship sees it, it does not tip it for other ship. Public health broadcast. My watching the health advisory will not reduce its ability for you to watch. Now let's talk about its combined effect. Classic market failure because private provision here is irrational. जब आप किसी को exclude नहीं कर सकते, जब there is no rivalry, competition, thing for exceptional profit, वो कम हो जाता है. So simple example इसका आप ले सकते हो national defense. No private firm in the world, no private entity will build an army that protects all citizens equally. Why so? Because it is not profitable. It is not profitable enough.
So there is a concept. I hope this is clear to you all. You can jot it down. It's in your SLMs as well. Public good and why market fails here, because public goods by definition are supposed to be non-exchangeable and non-rivaler. So जब non-exchangeable है तो exclude नहीं कर सकते किसी को. Once provided, you cannot stop anyone from benefiting whether they have paid for it or they have not. Non-rivaler है कि one person using does not reduce its ability for others. एक छोटा सा concept आता है before we go to externality, that is of free rider. So what is the free rider problem? Why rational individual produce irrational outcomes is, so free rider problem ko you can explain easily by something which is known as ticketless traveling. So if I know that immunity will protect me, whether I or not I vaccinate personally, go and vaccinate or not. So the individual rational choice is to skip vaccine to avoid any adverse effect या कुछ भी, to save right and free ride. If every individual in the market has this rational choices, no one will vaccinate. पड़ोसी तो कर रहा है ना. So now no one will vaccinate, herd immunity collapses. The disease is again returned. Government subsidies strong enough to make vaccine free and convenient, or social norms are so powerful that it overrides this individual calculation that you will have in your head. You will get WhatsApp forward on televisions, on game. You will be motivated to what? Apply for it. Now we instinctively want to blame free rider for being selfish. But the free rider is not only being selfish, they're also being a element of rationality is there. Now, given the incentive structure, skipping the vaccine is the correct individual decision. Could we? जब सब करवा लेंगे सिर्फ मैं नहीं करवाऊंगा तो बीमारी तो ऐसे भी नहीं है. But the problem is not of individual morality, it is of the incentive structure. अगर नहीं करा रहे तो. Because उस selfish choice को उस is actually rationally justified. पर जब आप true incentive देते हो, this is the single most important insight in public economics. Individual rationality plus public goods. This is a collective irrationality. So when we fix our incentive structure, not the individual, this is why policy matters more than moralizing, more than thinking about the moral consequences of it. Okay? Your incentive structure to get a vaccine should be way more than the morality of doing it or not doing it. Now we come to the second concept. The second concept is that of externality. We have had a very lengthy and fruitful discussion on externalities in our class. If you were in the offline class, you might have had it. So right now we will do a revision from the exam point of view because we are covering the entire syllabus in these 4 hours. This is your revision class. An externality is a cost or benefit that fails on a third party who was not a part of the original transaction. An externality is a cost or benefit that falls on the third party who was not part of the original transaction.
The market price do not reflect this cost or benefit, which means market produces either too much or too little. Externality is everywhere in health, education, which is a economic justification for government to intervene in both. Externality is the economic justification for government to explain into both. And I will add up to my sentence here that I am saying you all. I hope the definition you remember externality एक cost या benefit होती है जो third party पे fall करेगा जो उस transaction का part था ही नहीं. दो लोगों ने मिलकर एक transaction किया है उसका या तो cost या तो benefit एक third party पे fall करेगा was not the part of that transaction. उसको क्या बोलेंगे हम externalities. याद रहेगा. So now we have two types of externalities. First one is positive externality. The third party benefits from the transition and they did not even pay for it. The third party here will benefit from this transition and they have not even paid for that transition. This is your positive externality. हम ट्रांजिशन का पार्ट नहीं थे लेकिन इससे जो बेनिफिट होगा हम उसका पार्ट हो रहे हैं. So in exam they can ask you describe externality and then describe the types of externalities. Okay, तब आपको externality का ये वाला definition देना है and उसके बाद में you have to add up through explaining more about the positive externality and about the negative externality. Clear है? Positive externality is when third party is benefiting from the transaction and they did not pay. The factor that trains workers nearby firms benefit from the better local labor pool which is there now. Vaccination, your immunity protects my unvaccinated little kid who cannot be vaccinated. Education में देखो, your education literacy makes you a better voter, a better worker, better neighbor, which is benefiting to me. You came to this college, you paid the fees. I did not. You paid that fees, but you are becoming a better citizen. You are becoming a better citizen is a positive externality to this country. So when you subsidize or mandate the market, under produce becomes private benefit is always less than social benefit. Social benefit is always more than private benefit. When you talk about negative externality, a third party bears the cost from the transaction they did not choose. The third party is bearing the cost of the transaction that they did not choose. The factory that pollutes the river, the community is paying the price for it. If you are smoking, am I audible? Okay. So the factory is polluting the river downstream and the entire community is paying price for it. Smoking, you are smoking cigarette, you are filling your lungs with carcinogenic. It is a choice that you have made. But what is happening even there's a thing called passive smoking. So I am also becoming a part of it. Any untreated infection disease. Suppose somebody has TB, that can spread. So, bolo. Yeah,
So when you talk about government response to negative externality, that is taxation or regulation. So that is why you will see ki there is a lot of taxation on cigarettes, regulation. In public places, you cannot smoke. In hospitals, you cannot smoke because you are making a conscious choice of speaking. But people who are not linked there, they are also suffering the consequences of the same, of the choice that they did not make, which is leading up to a negative externality. So there is something called Pigouvian tax. So making the price tell the truth. So Arthur Pigouin करके there's a person. He argued that if a product creates social cost, so social costs not captured in its price, you should tax it until the market price reflects its true social cost. This is called Penguin tax. So India's tobacco tax is a penguin tax. Sugar tax in UK, Mexico are penguin tax. Carbon taxes are penguin tax. So the logic is elegant. You do not need to ban harmful products. You just need the price to tell the truth about what they cost the society. So, education has the highest positive externality. It actually bars none. Like education is the highest positive externality of any investment. So when a girl who is living in rural Bihar completes her secondary education, the positive externality compounds for decades. She earns more positive externality for her family. She marries later, positive externality for her health, her children's health, not teenage pregnancy. She has fewer children now because she's an educated mother. So positive externality on the population pyramid. She makes a better health decision for her family. Positive externality for health system. Her children are more likely to be educated. Positive externality on the next generation. The World Bank estimates that each year of girls' education actually increases future earnings by 10 to 12%. So all the girls in the class, you're having adding up to a huge, you are adding up to a huge positive externality for the society. Her children are more likely to be educated, positive externality on the next generation, and no other investment in developing countries comes even close to this social return. So, this is the economic case of girls' education, not sentiment, not equality, although both of them obviously matters, but it is also a pure economic decision. So, what it has high returns. Now coming to your merit goods. So merit good is a good that society judges should be consumed regardless of individual's preference or ability to pay. Now the government overrides the market because the individual may undervalue the good due to being ignored, ignorance, or short sightedness, or addiction, or individual is not capable of making the decision as a child. This is mostly philosophical, but there are three important concepts because it is extremely important.
मेरिट गुड की डेफिनेशन आपको ध्यान में रहेगी। मेरिट गुड गुड होता है is a good that society judges should be consumed regardless of individual preference or ability to pay. So government overrides the market because individual on a personal level may ड्यू टू इग्नोरेंस शॉर्ट साइटेडनेस या एडिक्शन इसको इग्नोर करे, बट इसका जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ योर एजुकेशनल गुड। इसमें ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा है, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। प्राइमरी एजुकेशन, why is it a merit good? Why is it a merit good? 6-year-old cannot make an informed choice about schooling. Poor parents may value immediate income over long-term education. Under under provision. So what so now what the market does without intervention? Children of poor families do not get to attend the school because they cannot pay the fees. So human capital gap compounds across generation. Inequality is triggered, become more. Now compulsory educate, compulsory schooling, free primary education, midday meal incentive. We have discussed the Poshan Yojana in class. So these are what is our government responses to deal with that situation. So primary education is a merit good because एक 6 year old अपने लिए चॉइस नहीं बना पा रहा है, एंड विदाउट मार्केट, विदाउट ये सुपरविजन मार्केट को भी कोई ऐसा डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है इसमें। सो गवर्नमेंट हैज टू मेक कंपल्सरी नेसेसरी कैटेगरीज फॉर इट। Talking about healthcare, a sick person may not know they are sick if the symptoms are not there. So this is informational asymmetry. Patient cannot assess quality or necessity of the treatment. So under consumption, so what happens without if the government does not respond? There will be under consumption cannot afford overconsumption of the billing size for people who can. Okay. So now going forward, you will see. Okay. What is the government response for healthcare in this scenario? You can say, give me.
यस, सो हमने इसकी बात कर ली थी, हेल्थ केयर की, और मेरिट गुड्स की बात कर ली थी। अब ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये चार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब हमने मेरिट गुड और इसकी बात कर ली थी, तो दीज आर लाइक दीज फोर क्वेश्चंस, दीज आर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी इस साल जो पेपर है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इसको नोट डाउन कर लो। क्लास के एंड में जब टाइम मिलेगा तो हम ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। अभी जो भी हमने डिस्कस करा, लाइक इफ वी कैन हैव वन लास्ट मिनट रिवीजन, तो हम ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। और अभी जो कुछ भी हमने डिस्कस करा एक्सटर्नैलिटी के बारे में, पब्लिक गुड के बारे में, इसके बारे में, वो यहीं पे रिलेट करता है। ओके, उसमें ही आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे, तो प्लीज राइट इट डाउन। चलो, फिर अब अगर ये सारी चीजें आपको पब्लिक गुड, मेरिट गुड, एक्सटर्नैलिटी सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मैं ग्रुप ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस करा है, डिस्कस्ड इट हियर आल्सो, ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर है, तो विल मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड यूनिट। लंबी क्लास है, पेशेंस रखेंगे, छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे, so that you do not fall asleep. Okay, this is everything about your first unit। ये आपका फर्स्ट यूनिट। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? आयरन ट्रायंगल। आयरन ट्रायंगल में we have discussed equity, we have discussed about efficiency, and we have discussed about sustainability. Then we have externalities, जिसमें हमने public good के बारे में बात करी है, which is and how market feels here, and we have discussed about, you have seen about the externalities, and you have also seen about the merit goods. Now, going forward, let's get to our second unit. Okay, so second unit आपकी 1 घंटे 50 मिनट का रिविजन टाइम चलेगा, and this is here where we will discuss about the current scenario of the class. उससे पहले आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है यूनिट 1 में, आयरन ट्रायंगल में हो, या फिर आपको मार्केट फेलियर पे हो, पब्लिक गुड पे हो, एक्सटर्नैलिटी पे हो, मेरिट गुड पे हो, किसी भी चीज पे हो, आप आके कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप, यू कैन टेक्स्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस about unit 1 related to that, you can ask. You also have some exam point of view से relevant questions here. What is a merit good? What are the two? Why is primary education and merit good in India? We've just discussed. Okay, so let's move to the second one. So this is where we will talk about this unit. Is it gets a little hard on heart? I understand, but so this is where in your paper we talk about everything that is kind of not correct with our country right now. All that we can improve, all that we can
we hear, what we can think. Do you want me to discuss the answer first? The question answers आप चाहते हो सेकेंड यूनिट से पहले? चलो एक काम करती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू. सपोज जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें इट इज कि critically evaluate the role of government in health and education provision in developing countries in India. It is a long 15-mark question. Now, how do you answer that question? What should be the structure? So have us start with the structure, establish why market fails. Talk about externalities, talk about merit goods, talk about public goods, role of government, regulate, fund, provide, evidence from India, right to education, ASHA program, PMJA program, evidence from the globe, then UK NHS, थाईलैंड की जो 30 बात है वो कर लो, उसको थोड़ा सा give it as an example, and then evaluate, then have a critical evaluation ki how government fails. You can talk about underfunding, you can talk about inefficiency, you can talk about political capture, you can talk about the short timeness of कि जब कोई पार्टी आ रही है तो अपने विजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है. You can talk about conclusion, market failure, government failure. Now, case of this is like a well discussed presentation. Okay, so you answer all the short question with reference to the iron triangle trade-off. Is that clear? It's something you can do? Great. So let's move to the second unit. मैं भी अब थोड़ा धीरे बोलने लगी हूँ because I assume कि it's a long class, so have to take care of the throat, है ना? Okay. Coming to the second unit. So India's current ratio plus public-private partnership. I am going to read 5 numbers and I want you to sit with each before we move on. These are not statistics for exams, but these are actually human lives. So these are data, 5 numbers every student must know. First number is 1.35 percentage of GDP. 1.3 percentage of GDP of India's health education spending. So every India spends less than 1.4 rupees out of every 10 rupees of national income on public health. So Rwanda, the post 1.14 rupiah out of every 100 rupees for national income on public health. Rwanda, which is an African country, spends 4.5. Thailand, 3.7. UK, 10%. This is a political choice, not an economic constraint. India's large economy is enough to spend more. Is a strong statement that you can believe. पर हम health पे कितना खर्चा करते हैं? 1.35% of the global GDP. Your second number. 60% of health spending that is out of pocket, which means if you or your family or anyone's family gets sick in India, 60 paise of every rupees on the treatment cost comes from their own pocket. Direct impact क्या होता है? We'll have the next number to discuss that. So UK में
The same number is 15%. Thailand made is 12%. This means illness is there's not supposed to be a financial catastrophe. A financial catastrophe. For most Indian families, no savings buffer, no insurance, just the bill. So 55 million Indians pushed into poverty by healthcare cost every year. More families fall into poverty from medical bill than from any other cause. This is not a health statistics. It is a microeconomic emergency, if I may say so. Poverty is self-enforcing. Poor families cannot invest in education or in preventive health care. So this is just a perpetual cycle. I present to you the next number, which is 0.4 doctors per thousand people in India. India has 0.4 doctors per thousand. WHO recommends minimum 1.0. Cuba, African country, has 8.4. The doctor shortage in this country is it actually drives up the excess down, access to good healthcare simultaneously. In many districts, the nearest doctor is more than 30 kilometers away. The other number, 55% children aged who cannot read a 10 cannot read a simple paragraph. 55% children aged 10 cannot read a simple paragraph. After 75 years of free primary education, more than half of Indians 10-year-old are functionally illiterate. So ASER data confirms that this is not improving. We have been sending children to school without ensuring that they learn. Without one very important aspect is that attendance is not equivalent to learning. This is a central crisis of Indian education. So India's doctor shortage cannot be solved by training more doctors alone. Only डॉक्टर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करें तो वो सिर्फ इससे सीधा सॉल्व नहीं हो पाएगी. सो ट्रेनिंग अ डॉक्टर does take 10 years minimum, needs 600,000 more doctors by conservative estimate. At training capacity, filling that through traditional means would take 40 years. This is why task shifting, telemedicine, and AI are not optional innovation. They are strategic necessities. You cannot train your way out of a 40-year gap. You have to redesign the system so that the gap becomes irrelevant. This is the strategic insight, and we will connect it to Unit 2's diagnosis with Unit 3's innovation. So, public and private provision, this is the central debate of your second unit. Okay. I hope it is right in front of you on your screen. 72% of India's hospitals are private, but 70% of poor Indians rely on public facilities. This one fact captures the entire tension of Unit 2. The majority of our infrastructure is private, and majority of our most valuable citizens depend on the minority in that public.
Equity. Universal equity is universal in theory. Riches to poor cannot be excluded by inability to pay. This is your equity. Selective. Private provision only serve those who can pay and have insurance. Systematically excludes the poor. Quality. Often people, often poor public provisions ki and chronically underfunded. You will have staff absenteeism, equipment shortages, variable. In the private sector, if you see excellent and premium, Apollo, Fortis, uh, then efficiency की अगर आप बात करो, so in public provision, low. It's a very bureaucratic process. Competitive, no competitive pressure, no, there could be political interference as well. So the high of profitable service, the zero of unprofitable service. Market ignores the ruler and poor population. In the private sector, accountability, when you talk about for government provisions, you have public accountability. You cannot vote, can be voted out, but like not in the middle of the term. Slow, opaque, subjected to capture. When you talk about market accountability, consumer choice disciplines quality, but only for those who can choose. When you talk about cost, free and heavily subsidized, it will eliminate any financial barrier. In private provision, again, it is high. Often, it is high. It is 60% out of the share reflect this. Catastrophic. So dimension is like India's reality. PHC, district hospital aims essential but underfunded. In private, 72% of hospitals, 40% of rural health provision, 80% of urban super specialized healthcare you will get. The honest answer of public or private is neither can work alone. Pure public provision without adequate funding produces just empty building with absent staff. Pure private without regulation produces expensive care for the rich and nothing for the poor. The question India and every developing country is trying to answer is how do you design a system that pays private efficiency without having the with public exclusion? And to answer that question, we have something called PPP, the public-private partnership, the made by the make or buy decision at a national scale. In business strategy, every firm faces the same make or buy decision, build its capacity internally or contact it at a specialist who does it better. Now, PPP is the more of make or buy decision for government. Government defines the social mandate, such as universal coverage हो सकता है, quality standard हो सकता है, price gap हो सकता है, and the private sector delivers using it, using its efficient program and operational expertise. Okay. So we have the PPP model, service contract. A service contract, it is government pays private
provider to deliver specific service. So Indian example would be private labs run in government, diagnostic test, then strategic length leverages private efficiency for clearly defined service. Strategic weakness इसकी क्या हो सकती है? क्वालिटी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के बर्डन पे आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है. देन वी हैव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है? गवर्नमेंट ओज फैसिलिटी, प्राइवेट पार्टी मैनेज करती है इसको. इंडियन एग्जाम्पल हो गया प्राइवेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, some state experiment. So it retains public ownership and universal access mandate. Now it is, इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? It is difficult to sustain. Private manager has no equity stake in success. So now you build, operate, transfer. So private party builders, अगर आप build, operate, transfer model को apply करोगे, which is like the third one. The private party build, operate and transfer ownership to the government after a period. कुछ एम्स के कैंपसेस की बात हो गई, मेडिकल कॉलेजेस. सो ये एक्सपेंशन है इसी पीपीपी मॉडल के. गवर्नमेंट गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट द अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट. इसमें स्ट्रैटेजिक वीकनेस क्या है? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इट विल क्रिएट लॉक इन, क्वालिटी ड्रॉप इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट properly specified. Then if you have vouchers or insurance scheme, so government gives vouchers insurance scheme to patient. They choose the provider. So जैसे कि बात होगी आपकी RSBY, PMJ, सो जन सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना, इसमें पेशेंट के पास में चॉइस है, तो इट एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करता है प्रोवाइडर पे. डिसएडवांटेज क्या है? कि इट कुड बी अ मोरल हजार्ड, फ्रॉड, एडवर्स सिलेक्शन, जिसमें होता था ना RSPY की जो हॉस्पिटल्स थी उसमें सी सेक्शंस बहुत ज्यादा ही होने लगे, क्योंकि क्या हुआ? इट वाज लाइक अ मोरल हजार्ड, क्योंकि पैसे तो गवर्नमेंट दे रहा है, तो वी वेर लाइक पीपल वुड मिस यूज इट इजिली. ओके, this is a very important here. Okay, please have a look at this PPP and your private ये model. इसको इस इसको एक बार देखो, कोई भी डाउट हो तो आस्क मी, गिव मी. ठीक है, सो स्टार्ट इन 1 minute. I think you should jot it down actually.
लिख लिया? Okay, so let's move ahead then. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. दिस इज अ केस स्टडी फॉर योर एग्जाम. So, Rashtriya Swasthya Bima Yojana was launched in 2008. Government paid the premium around 30 per family per year. Now, BPL families got a smart card, cashless treatment at in-panel hospital up to 30,000 rupees per year. So, 36 million families were enrolled at its peak. The conceptual design thing sounds good, but execution was a failure. Why I say so? The first problem was that of a moral hazard. C-section rates at RSBY impaneled private hospitals shot up significantly. What it does, a C-section at a impaneled was billed at 2-3x more the rate of a normal delivery. Now hospital gets more revenue. Government pays. Patient has no incentive to question. Now insurance without outcome monitoring creates such perceive initiatives. The initiative structure must align provider income with a patient outcome to have to produce a volume. Now, what was adverse selection here? So, healthier below poverty family often did not bother to enroll. If you're healthy, you don't think you need insurance. So, the pool skewed towards the sicker families. हमें तो ईश्वर जल्दी से हम कुछ इंश्योरेंस ले लेते, making the scheme more expensive per beneficiary. Now, universal mandate enrollment is necessary to have an insurance pool that is viable. PMJ addresses this by auto-enrolling the bottom 40% based on the S, then the survey S ECC data. Okay. So this is social economic caste census. So now when you talk about fraud, some hospitals are fraud भी कैसे हो रहा था कि कुछ हॉस्पिटल फेल थे to produce never performed. So there was no real-time claim of monitoring. Weak inspection hota tha. Smart card system was inefficiently secured. Digital claim processing with AI-based fraud deduction इससे हो सकता है. Essential infrastructure होता है. फिर lower awareness होता है. So now we have low awareness. Many eligible family did not know they had a coverage. उनको पता ही नहीं है. So इसमें क्या होता है कि there is an informational gap, especially in rural areas where literacy is low and outreach is limited. Scheme that no one knows about
is a scheme that does not exist. So, enrollment drives, ASHA worker outreach, community mobilization are important as the policy is designed. अब आयुष्मान भारत में हमने क्या चेंज करा है राष्ट्रीय से, तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था. इट कवर्स 50 lakh families per year, covers 500 million people. The bottom 40% of India is automatically enrolled based on your census data. Now cashless treatment at 2500 plus in paneled hospitals across India. So that is world's largest government funded health insurance. Now improvements over RSBY, high coverage, automatic enrollment. So this addresses the averse selection. So this is beneficiary. So this is beneficiary verification app and the real-time claim monitoring. So now the remaining challenges, this is fraud, quality of impaneled hospital, out of pocket, and these are your non-covered elements. This is the difference between your RSBY जो 2000 और उसके 10 साल बाद जो आयुष्मान भारत इसमें हुआ था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. ठीक है, कि हमने क्या सीखा, क्या ये करा. अभी थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर के भी बारे में बात करते हैं, एंड वी विल also discuss about a few important questions. Okay, so when we talk about education sector, the current scenario primary is 6 to 4 years, which is near universal. So universal, this is clearly near universal. And attendance इसमें क्या होती है, is not equal to learning. 55% of functionally illiterate at the age of 10. So RTE Act was a free and compulsory education, midday meal. You have Literacy Bharat, Nipun Bharat Yojana, जो कि government initiative है. When you talk about secondary, which is 14 to 18 years, gross enrollment ratio 80%, drop out driven by poverty and early marriage of girls and need to work. So इसके लिए समग्र शिक्षा, scholarships, girls hostel schemes are government initiatives. Then we have higher education जिसमें अभी आपने देखा 99% था enrollment ratio, then 80% secondary में, और higher education में it's close to 28. So across squeezed by income and geography, quality viable है. Across squeezed by income and geography, quality viable है. So HIFA funding हो गया, फिर देयर इज IIT IIM को एक्सपैंड करने की कोशिश, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में होता है, क्रेडिट फ्रेमवर्क. So in these are your government initiatives. Now when we talk about India has achieved near universal primary health school education. This is a genuine achievement. But when you look at the annual statistics and education report, it tells a different story. In 2002, only 42% of class 5 students uh, have enrolled, but they are not learning. The inputs are present. Building, teachers, textbook, midday meals. Output is functional literacy. So this is missing.
The so this is the difference between measuring the input attendance and measuring the outcome which is learning. So न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है वो explicitly recognize करती है इसको, and it is called fundamental foundational literacy and numeracy as the first priority. So the strategy mission measures how what matters and not only the ease of counting. Okay. Now let's have a few questions, discuss a few questions and examples. So, what is the output? What is out of pocket health expenditure and why? What did India's 60% of OPP figure tells you about the health system? So, I'll guide you to answer this question. Health expenses paid directly by individual households by the time of service, not coverage of insurance scheme or India. So India's 60% must health financing burden falls on the household. So making illness a cas- catastrophic financial risk. Compare it to यूके जो 15% है, थाईलैंड 12% है. इसमें इम्प्लीमेशन क्या है? नीड फॉर अ यूनिवर्सल इंश्योरेंस. जब हम पीएम जय की बात करते हैं तो सब्सिडरी हाउस होल्ड हॉस्पिटल the strong answer it is linked to 55 million people are pushed into poverty annually. Now define PPP in the context of health service. So give two examples from India. इसमें आप क्या करोगे? Government says the social mandate, funds regulate. So जब आप प्राइवेट सेक्टर डिलीवर करता है एफिशिएंसी, पहला एग्जांपल आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दे सकते हो कि government gets premium, private gets social hospital treatment of below poverty families, because ऐसे below poverty families को treat करने का private hospital के पास में कोई भी इंसेंटिव नहीं है. जब इसका कोई इंसेंटिव नहीं है तो इससे क्या होगा? नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट ही नहीं है. इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे? आप इसको आंसर कर सकते हो इन दिस वे, ये दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हो. सो जब आप गवर्नमेंट फंड्स की बात करोगे, इसकी ये करोगे, तो आप फिर सेकंड एग्जाम्पल पीएम जय जो कि आपका आयुष्मान भारत है उसका भी दे सकते हो. इसमें क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट फंड हो गया अप टू 5 लाख का कवरेज दे रहे हैं. इसमें आपका पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैनल्ड है, डिलीवर कर रहे हैं, एंड दोनों का वीकनेस, दोनों का स्ट्रेंथ आप साथ में लिख लो. Then your third question is कि moral hazard. What is moral hazard? And illustrate the reference with insurance scheme in India. हमने क्लास में बहुत अच्छे से ये डिस्कस करा हुआ है कि मोरल हजार्ड क्या होता है. मोरल हजार्ड के बारे में आप बता दोगे, दो चार लाइनें इंश्योरेंस के बारे में लिखोगे पहले, उसके बाद फिर आप मोरल हजार्ड के बारे में लिखोगे. When insurance removes financial consequences, the behavior changes. So इस चेंज इन बिहेवियर के बारे में बताओगे. इसमें आप एग्जाम्पल दोगे आपका RSBY का सी सेक्शन रेट जो रोज हो गया था पैनल हॉस्पिटल में, बिकॉज हॉस्पिटल बिल्ड एट अ हायर रेट विद नो मॉनिटरिंग. इसमें आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हो? यू कैन टॉक अबाउट को पेमेंट, गेट कीपिंग, आउटकम बेस्ड पेमेंट, रियलिटी एंड क्लेम ऑफ मॉनिटरिंग की बातें कर सकते हो. नाउ there is one more question, that is your critically assess the right of education, REA 2009 Act, and it's achieved its objective. Has it achieved its objective? तो आप इसमें पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बताओगे कि आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 40. इसमें नियर यूनिवर्सल इनरोलमेंट हमने अचीव कर लिया है 99% का. स्ट्रेंथ क्या था कि फाइनेंशियल बैरियर्स हटा दिए गए,
मैंडेट किया स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड बढ़ाया गया, चाइल्ड लेबर को एड्रेस किया गया। वीकनेस क्या है कि बच्चे स्कूल आने लगे, स्कूल आके लर्निंग का ये नहीं हुआ, क्योंकि 55% इलिटरेसी अंडर द एज ऑफ 10 है, तो 10 साल से छोटे बच्चे कोई पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते। तो इनपुट फोकस एनरोलमेंट बिल्डिंग उस पे हो गया, बट आउटपुट की एक्चुअली में क्या सीखा है ना, उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, निपुण भारत 2001 में, जो एज अ करेक्शन था। तो इफ यू राइट अ स्ट्रॉन्ग आंसर इट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन एनरोलमेंट एंड लर्निंग, बट आप स्ट्रेट अप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, बिकॉज नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट रेट 0.99% का इज एक्चुअली ग्रेट। सो when you critically evaluate the public and private debt in healthcare in India, what role should each play? जब आप हेल्थ केयर और डिबेट की बात करोगे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट की बात करोगे, तो क्या रोल इट शुड प्ले? इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने मॉडल की लॉजिक को लेके आओगे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस है, 72% हॉस्पिटल जो सिर्फ अर्बन एरिया में काम करते हैं। देन आप बात करोगे पब्लिक डिफिशियंसी की, कि पब्लिक में कैसे आपका एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म होता है, डॉक्टर्स कम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है। उसके बाद फिर होता है कि पब्लिक का स्ट्रेंथ क्या है, कि किसको मना नहीं करते, यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटी है, प्राइवेट फेलियर का है, अंडर फंडिंग, एब्सेंटिज्म और क्वालिटी का। तो रिकमेंडेड मॉडल एक होता है ना, कि when they come together they are very complementary in nature, and ये एक ब्रिज कर देता है गैप को। सो इस पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा, और ये लॉन्ग आंसर है, 15 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप इसमें आप एविडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज भी यूज कर सकते हो। अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो आप पॉटर का 5 फोर्स मॉडल भी थोड़ा सा ये कर सकते हो, हेल्थ में क्यों मार्केट फेलियर होता है, और कंट्रीज के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो उस हिसाब से ये जाएगा। सो नाउ जब हम बात करते हैं RSP एंड PMJ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की, व्हाट आर द की लेसन्स फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया? सबसे पहले आप डिजाइन, स्केल, स्मार्ट कार्ड, ये सब की बात करोगे, कैसे 36,000 मिलियन फैमिलीज एट द पीक वहां उस वक्त पे इनरोल थी। उसके बाद मोरल हजार्ड है, फ्रॉड है, इसमें सिलेक्शन, लोअर सिलेक्शन, इसकी बात करोगे। डिजाइन लेसन्स है, अब इसमें क्या होता है, मैंडेट एनरोलमेंट है, आउटकम बेस्ड पेमेंट्स है, सो नॉट प्रोसीजर बेस्ड है, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन की बात कर रहे हो। फिर अगर आपको थोड़ा सा की लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज है, तो आप सिंगापुर के 3M मॉडल के बारे में कर सकते हैं बात, थाईलैंड के 30 बैट मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे कि डिजाइन से ज्यादा इंटेंट मैटर करता है। अब आपका मान लो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। सो इंडिया स्पेंड्स ओनली 3.5% of GDP on public health. So what are the consequences of this investment, और इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इसमें एक होता है ना कि आप शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर की बात कर सकते हैं, 0.7% पर 1,000 डॉक्टर है। OPP एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हो, 55 मिलियन। पॉवर्टी, मोर इलनेस, पुअर क्वालिटी। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब एग्जांपल दे सकते हो थाईलैंड का, UK का, कि वहां पे 10% है, यहाँ पे इतना है। तो इंडिया फिगर इज अ पॉलिटिकल चॉइस, इट इज नॉट अ इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट ओनली। इसमें जो रिकमेंडेशन है, टू इंक्रीज एटलीस्ट टू 2.5%, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट भी है। प्रायोरिटाइज, और देखो जब सिर्फ
एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे बढ़ा दोगे। जब पैसे बढ़ाओगे तो ऑन ग्राउंड उसके लिए काम भी होना पड़ता है, और जब वो काम किया जाता है, जब काम किया जाता है तो उसका वही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर जब थाईलैंड मॉडल होता है, यूज ऑफ एआई होता है, टेलीमेडिसिन टू ब्रिज सप्लाई गैप, एक्सपैंड पीएम जब, एड इसमें हम मेडिसेव की बात कर सकते हैं, फंडिंग, जब इनकम टैक्स, तो इन चीजों पे आप टोबैको टैक्स, अल्कोहल टैक्सेस, हम इन चीजों पे बात कर सकते हो जो कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का स्पेस देंगे। तो अब एक स्ट्रॉन्गर आंसर लिखने के लिए तो आपको उसको थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के साथ में लिंक करना पड़ेगा। ओके। ओके, सो दिस इज योर थर्ड यूनिट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। गो थ्रू these data, like this data. शुरू से देखते हैं। अगर आपने अपने आंसर में सारा डेटा मेंशन करा, ये करा, तो एक automatically it will be really impactful. It will have more ये to your answer. It will give it more substance, more ये। और ये डेटा हम ऐसा नहीं है पहली बार डिस्कस करें, मल्टीपल टाइम्स हमने क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करा है, ओपिनियंस लिए हैं, डिबेट्स करे हैं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड यूनिट, दिस इज योर सेकेंड यूनिट, ठीक है। 4:40 हो रहा है, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स, एंड थोड़ी देर का 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड वी स्टार्ट अगेन, ठीक है, विथ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है। आई नो थोड़ी लंबी क्लास है, बट रिविजन है, एग्जाम्स है, तो यू हैव टू कीप द स्पिरिट, ओके। पीपीटी is sharing on your screen. Let's meet in 15 minutes, ठीक है। Drink some water, go freshen up, and come back in 15 minutes. We'll start at 5.
Chalo, so we'll start. I hope आप लोगों ने jot down कर लिया जो भी whatever you felt important in your. Okay, चलिए. तो अब हम क्या करेंगे? We will move ahead with the next unit. I hope my screen is visible. चलो थर्ड यूनिट की बात करते हैं. So third unit is all about the innovators. We have discussed a lot of problems अभी जो हमने first unit, second unit में देखा है. So now going forward, we'll talk about what are the solutions to those problems. ठीक है? एक मिनट तो मैं earphones लगा लेती हूँ ताकि आपको आवाज clearly आए. I hope I am completely audible to you all. Hi Veena, how are you? Hello Veena. Okay, so we are now discussing the third unit. So अभी हम लास्ट के दो यूनिट डिस्कवर करने की लास्ट के दो यूनिट करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, लास्ट के दो यूनिट आपका डिस्कवर एक बार ये डिस्कस हो जाता है तो दैट मीन्स दैट योर सिलेबस इज आल्सो कंप्लीट. ओके, सो दिस इज योर थर्ड यूनिट विच इज अबाउट द इनोवेटर्स. जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है अभी आगे के इससे पहले वाले यूनिट में, इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी करते हैं. सो डिस्पाइट द इश्यूज दैट वी हैव इन आवर सिस्टम, there are people who have overcome, and this unit is all about those people. This unit is about innovation, about strategic management, getting over the problem that we have.
So this is a 50-minute lecture. Let's start. So if Unit 1 tells us about the market failure, if Unit 2 shows us the consequences in India, then Unit 3 is where the course becomes genuinely figuring out. Because this is where the people who looked at the broken system and said, we can fix this without waiting for the government. Arvind, Narayana Hridyalaya, the insurance innovators, AI companies, they did not solve poverty. They did not change politics. They changed the system design, and that changed everything. We'll start with frugal innovation, the philosophy of it. I want you all to be here. बहुत ज़्यादा explanation, example deviate नहीं करेंगे topic से. हम class में सब discuss कर चुके हैं already. ये कर चुके हैं. Now right now exam point of view से मैं आपको content पढ़ा रही हूँ. आप फोकस करो मेरे हर वर्ड पे जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस पे. So that वो definitions और वो explanations आपके दिमाग में exam point of view से ingrained हो. Okay? So when we talk about frugal innovation, P.K. Prahalad argued that the argued in the fortune at the pyramid, bottom pyramid, जो 2002 का उनका पेपर था, the world's poorest 4 billion people are not a charity problem. They are an untapped market. Serving them requires designing products, services, and scratch of their context. Now, not adapting to expensive Western solution downward. This is frugal innovation, removing cost without removing quality. What are the principles of frugal innovation? First one is task shifting. Task shifting का मतलब क्या होता है? Match the qualification to the task. Don't use a surgeon to do a paramedic can do. इसका हेल्थ एप्लीकेशन होता है. अगर आप एक एग्जांपल देखोगे तो आशा वर्कर स्क्रीन ऑफ दे आर लाइक द स्क्रीन ऑफ malnutrition. दे हैव नर्सेस स्ट्रक्चर रूम, तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काम करते हैं. फिर एग्जाम्पल अगर आपने देखो तो अरविंदम ने पैरामेडिकल हैंडल्ड ऑल प्री ऑपरेशन वहां पे पोस्ट ऑपरेटिव, और सर्जन का जो स्पेसिफिक टाइम था सिर्फ हाई क्वालिटी सर्जरी पे जाता था. सेकंड प्रिंसिपल इसमें वो यूज करते हैं कौन सा? वॉल्यूम इकोनॉमिक्स का. वॉल्यूम इकोनॉमिक्स क्या होता है? कि spread the fixed cost over a maximum output per unit cost falls as volume rises. Cataract surgery. So अगर cataract surgery is like a fixed cost of theater surgeon training, equipment spread over 2000 surgeries, not years. And then we have Arvind. तो Arvind is like कि सर्जन क्या कर रहे हैं? दे 5000 ग्लोबल एवरेज कर रहे हैं कॉस्ट पर सर्जरी, 120 ऑफ द प्राइवेट रेट सेक्टर. नाउ थर्ड पॉइंट इज योर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं? we define and perfect every step. The system carries quality and not individual seniors. Every surgical step is defined, every staff rule is scripted. No improvisation, consistency at all scale. It's kind of like McDonald's for surgery. And Dr. V of the Arvindam Hospital, he literally said that McDonald's is his inspiration. So now constraint driven design. इसमें क्या होता है? Design for the constraints, not despite it. जो आपके shortcomings है आप उसके लिए डिजाइन करोगे. Constraint force for a better solution. इसमें क्या होता है कि जयपुर foot for barefoot walking on uneven ground. एक एग्जाम्पल है जो कि $1200 का जो वेस्टर्न प्रोस्थेटिक लेग का यूजर था उससे एक बेटर ऑल्टरनेटिव है. सेम विथ GE Mac 400 ECG जो कि पोर्टेबल बैटरी पावर्ड है जिसमें टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होती. तो 1976 में
Dr. V. K. Venkateswamy, Dr. G. Venkateswamy, also known as Dr. V in Madurai, with 11 beds. Dr. V has retired from a government medical service at the age of 48 with severe rheumatoid and he had severe arthritis. He could barely hold the pen, let alone a spackle for surgery. So he went to found an organization today that performs 4 lakh surgery per year without outcomes matching the best hospital in the world at the 20th of the private market rate. So he solved is not his hand, but he solved a system design. What are the models of Arvindam? बहुत अच्छे से हमने क्लास में already discuss करा हुआ है. 60 to 70% of Arvindam patients pay nothing or have a heavily subsidized fee. 30 to 40% pay the market rate. Now, revenue from the paying customer is completely cross subsidized with the free patient. So, Arvindam here runs at a surplus. There is no government grant, no donation, no primary source of funding. This is not charity, it is a business model, which is extremely profitable. It is an extremely profitable business model. Okay. And that is why it is what? More sustainable. सो इसके कुछ रेलेवेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्रॉस सब्सिडरी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं. तो जो पेइंग कस्टमर है 30-40% जो अरविंदम को क्वालिटी के लिए चूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अरविंदम क्या है कि क्वालिटी इज एज गुड एज इट इज एज गुड एज द टॉप private hospital, eye hospitals in the world. So now the business result is like it is self-sustaining, surplus जो होगा. There is no interest in expansion and research, no dependency on government or on donors. So दूसरा क्या है? Parallel operating tables. So दो टेबल होता है एक थिएटर में. सर्जन ए पे काम कर रहा है तब तक बी को प्रिपेयर किया जाता है बाय पैरामेडिक्स इंटरमीडिएटरीज और सर्जन परफॉर्म कर पाता है. इस कारण से 2000 सर्जरीज वर्सेस जो ग्लोबल एवरेज ऑफ अ ईयर है वो 400 है. फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सर्जन को 500 गुना आउटपुट पे स्प्रेड कर दिया. तो टास्क शिफ्टेड वर्कफोर्स करके हो गया. पैरामेडिक स्टाफ ट्रेन बट नॉट अ डॉक्टर हैंडल्स ऑल प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर. देन लेबर कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है. इसमें सर्जन का टाइम एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली फॉर हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी होता है. एरोलैब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो अरविंदम मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन इंटरसेलुलर लेंसेज थ्रू एरोलैब और वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ की एंड व्हाट इज कंज्यूमेबल. सो लेंस कॉस्ट फेल करता है जो ऐसे 200 में फेल करेगा वो एरोलैब में $4 में हो जाएगा जो $200 क्योंकि उनका खुद का इनोवेशन है और अब ये एक्सपोर्ट भी करते हैं 130 देशों में. तो जब हम उसके बारे में क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता था कि डॉक्टर बी ने बोला था एक सेंटेंस की जो ये लेंसेज हैं मैं पेइंग कस्टमर्स को दे पाता हूँ, नॉन पेइंग को नहीं दे पाता हूँ बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव, इट मेक्स मी फील गिल्टी. एंड दे हैड देयर इन हाउस लैब जिसने इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया था. सो दे हैव अ कम्युनिटी आउटरीच कैंप जिसमें क्या होता है ना कि हेल्थ स्क्रीनिंग इन विलेज आइडेंटिफाई किया जाता है, पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है हॉस्पिटल में अगर उनको जरूरत हो तो. सो ये रीचेस ये पॉपुलेशन वो रीच कर रहे हैं जो कभी खुद से प्रेजेंट नहीं करते और प्रिवेंट कर रहे हैं ब्लाइंडनेस विच इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रीट ऑन द लेटेस्ट स्टेज. ओके. सो ये आपका अरविंदम का आप देख सकते हैं. अरविंदम का ये पूरा आपके स्क्रीन पे है the entire model. Uh, if you have any doubt in this, please understand this is like very important. Arvindam Eye Care model is one of the very important thing in your syllabus. Please जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही short form में है. Take a screenshot और write it down.
And then we will start with Narayana Hridayalaya. So now we will move on to Narayana Hridayalaya. Okay. So डॉक्टर देवी शेट्टी का ये है, इसके बारे में भी हमने क्लास में बहुत डिटेल में बात करी थी, तो आई होप आपको क्लियर होगा. वी विल स्टार्ट विद अ क्विक रिविजन. सो डॉक्टर देवी शेट्टी का एम्बिशन था टू मेक कार्डियक सर्जरी, अभी भी है, एज अफोर्डेबल एज अ मोबाइल फोन. सो दैट वाज द प्रोडक्ट व्हिच वाज अ लग्जरी, एंड नाउ it is owned by everybody, even daily wage workers, laborers, से सबके पास है. तो नारायणा सबके पास में ही है. So it was like a प्रोडक्ट जो एक टाइम पे अल्ट्रा लग्जूरियस होता था, सिर्फ रिच लोगों के पास में होता था. नाउ यू सी कि इट इज विद एवरीबडी. तो नारायणा हृदयालय ने सेम प्रिंसिपल कार्डियक सर्जरी पे लगाया है, वॉल्यूम स्टैंडर्डाइजेशन, टास्क शिफ्टिंग, इन चीजों पे और प्रिसिशन पे. सो इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? कार्डियक सर्जरी, बाईपास, वेल, पीडियाट्रिक, हार्ट डिजीज, पीडियाट्रिक. एंड देन अरविंदम आई केयर की क्या है? दैट इज ऑर्थोमोलॉजी, मतलब आंखों का ज्यादा करके, केट्रैक, कॉर्निया, रेटिना. 2000 बैंगलोर में डॉक्टर देवी सेट्टी ने इनको फाउंड किया. 30 से प्लस हार्ट सर्जरी यहाँ पे हर दिन होता है, जो कि ग्लोबल हाईएस्ट है. एंड कॉस्ट प्राइस 1.2 से 2 लाख में हो जाता है, जबकि 8 से 10 लाख लगता है यूजुअली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे. इनका एक इंश्योरेंस इनोवेशन भी है विच इज नोन एज यशस्विनी, विच इज 1600 प्रोसीजर्स होते हैं, 3.4 मिलियन फार्मर्स मेंबर्स.
होते हैं, एंड देन क्रॉस सब्सिडरी में क्या हो जाता है, 60 to 70% फ्री होता है पेइंग मार्केट रेट पे। सो टेलीमेडिसिन में हेल्थ एटीएम्स इन कर्नाटका विलेज, ईसीजी ट्रांसमीटर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, ये इन मतलब इनको वो एज लाइक अ अप्लाई करते हैं, एंड दे यू विल सी इफ यू गो टू देयर यूट्यूब पेजेस, यू विल सी हिज वीडियो अबाउट कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड जहाँ पे वो टेलीमेडिसिन की से मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। देन दे हैव मोबाइल कैंप्स इन रूरल तमिलनाडु, स्क्रीनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो कॉमन स्ट्रैटेजिक लॉजिक है कि वॉल्यूम प्लस स्टैंडर्डाइजेशन, टास्क शिफ्ट, इससे क्या होता है कि एक मिशन ड्रिवन कल्चर बनता है। वॉल्यूम प्लस स्टैंडर्डाइजेशन, टास्क शिफ्ट, इससे एक यू विल सी की यू कैन एक्चुअली रिड्यूस, यू कैन सी द नंबर ऑफ पीपल जिनका लाइफ चेंज हुआ है। डॉक्टर वी शेट्टी ने कहा था कि वन पार्ट ऑफ योर माय जॉब इज रोज कमिंग एंड सीइंग, जो मैं किसी को बोलता हूँ कि देयर इज अ होल इन द हार्ट, माँ पहला सवाल ये पूछती है कि डॉक्टर साहब पैसे कितने लगेंगे। So he wanted to solve that issue. He wanted to solve that problem. जिसके कारण he came up with, he founded Narayana Hridayalaya. So this is the comparison between Narayana Hridayalaya and Arvindam Eye Care. ठीक है? So have a look यहाँ पे। ये जो दो लाइन नीचे है ना, that is very important क्योंकि both prove that iron triangle can be solved. Equity, efficiency, and sustainability with the right design. Neither need government subsidiary. They both are fully sustaining through volume standardization and cross subsidiary. Let's talk about insurance and a little bit more about the telemedicine, AI web, ये सारी चीजें. So this is extremely important. So insurance converts a lumpy, unpredictable, potential claustrophobic financial risk into a small, predictable, and manageable premiums. So, for healthcare, where a single hospitalization can cost several years of income for a poor family, insurance is not a luxury, it is a difference between poverty and financial stability. Health insurance, you have discovered, is that important. So now when we talk about types, so social government insurance, so funds, so government funds, taxes, cess. India is like, इंडिया में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आयुष्मान भारत का जिसने ऐसा कवरेज दिया, पर चैलेंजेस क्या हुए, मोरल हजार्ड के हुए। फिर कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस होता है जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स पूल करते प्रीमियम साथ में, जैसे अभी हमने यशस्विनी का पढ़ा कर्नाटका में। देन वी हैव प्राइवेट कमर्शियल इंश्योरेंस जिसमें एम्प्लॉय या इंडिविजुअल साथ में करते हैं, इसमें स्टार हेल्थ हो गया, आपका HDFC हो गया, एग्रो हो गया। देन वी हैव एम्प्लॉयर बेस्ड इंश्योरेंस, तो एम्प्लॉयर जो फॉर्मल सेक्टर में, तो इसके अंदर HR में भी आपने पढ़ा होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ECIC का होता है, जो कि 10 लाख का कवर फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉय देते हैं। कम इसमें दिक्कत क्या है कि सिर्फ फॉर्मल वर्कर्स को ही कवर कर रहे हैं, और 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स यहाँ पे मिस हो जाती है। ओके, सो दिस इज टेलीमेडिसिन।
When you talk about telemedicine and digital health, so India's telemedicine guidelines को इशू किया गया था 2020 में. अब क्या हुआ ना कि कोविड के टाइम में इट गॉट ड्रामेटिकली, इसमें बहुत सारा प्रेशर दिया गया. So pandemic actually it forced a decade of digital health innovation in 18 months, and it had remarkable result. So the result यहाँ पे क्या था ना कि national India's national telemedicine platform that crossed actually 10 million consultation by 2023 कोविड के टाइम पे हुआ था. हमने इसको बहुत क्लियरली डिस्कस करा था जब डॉक्टर्स के नंबर्स ये हुआ हो सर्कुलेट हो रहे थे फॉर एनी अदर प्रॉब्लम जिसको कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो या आपका उस तरह का ये पड़ता नहीं है प्रेशर, तो यू कैन डू इट इन दैट वे. सो इसमें एक संजीवनी की बात. So when you talk about Sanjeevni, Sanjeevni is like hub and spoke video of consultation. So इसमें क्या होता है ना कि 100 million consultations होते हैं available in all state, and patient does not need to travel for or specifically relocate for an information on you move. They can scale infinitely. So ABDM जो होता है ना ABHA है जो unique health card for every Indian, linked health record accessible across data. So इसमें इसकी भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी it's a layered infrastructure. So without service provider, cost started with zero and it is continue to become a care which is possible. फिर एक अपोलो टेक्नोलॉजी टेलीकार्डियोलॉजिस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि ईसीजी मशीन होता है रूरल क्लिनिक में, transmits reading to cardiologist in Chennai within minutes and thousands of remote reading daily आती है. इसमें क्या होता है cardiac management in rural areas without a cardiologist on site इसको ही कर सकते. We have Procto, we have 1mg, we have Enfine. तो उसमें ये होता है ना ऑनलाइन कंसल्टेशन, आप सबने यूज भी किया होगा, फार्मेसी डायग्नोसिस थ्रू स्मार्टफोन हो सकता है. तो उसमें क्या होता है कि मिलियन ऑफ अर्बन यूजर्स ने इनको यूज करा है, दवाइयाँ मंगवाई हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया है. तो ये क्या कर रहा है, डेमोक्रेटाइज कर रहा है एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन एडवाइस फॉर urban population, and it is also reduces unnecessary visits to the hospital. इसका एक और एस्पेक्ट है जो हमने क्लास में डिस्कस करा था, जो आंवला हेल्थ है, अदर सिस्टम्स है, तो उसमें क्या होता है कि दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग देम गेट बेटर थ्रू. So if you can have a look at telemedicine here, okay, you'll see what it is going forward ऐसा करके. Now when we go forward, यहाँ से you'll see these examples. I want you to go through that.
हाँ बताओ। अच्छी कोई देखो फिर 60% बना ले लो यहाँ जो आज मुझे मैसेज कर देंगे शुक्ला भाई को कि बंदे का मैं टेक्स्ट किया अगर आप बोलो ओके देख I cannot actually see you guys. You have been locked out of the meeting. I don't know, मुझे I think I'm out of the meeting or something because मुझे वो screen नहीं नजर आ रही है. I'm trying to join again. If you can, I don't know if you guys can hear me or not. Okay. I don't know if the meeting is audible or not, so I've asked to join in again. But I think the camera is like still on, so I think you guys can see me. I am out of the meeting, so I'm trying to join again. एक बारी.
It's some technical glitch. I'm trying to join the meeting again. Can you please let me in? What's this? हेलो विकास सर, आप एक बार मेरी वो क्लास में है ना मीटिंग के? मैं ओजस्वी बात कर रही हूँ। वो ना थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैडम, मैं क्लास में ही हूँ। अब क्लास में हूँ। अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया। अब मेरे को फिर से एंटर करने दीजिएगा। आई थिंक मुझे वो दिख नहीं रहा है कुछ भी। ओ, हेलो। मैडम एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। वो हो गया, सॉर्ट सॉर्ट हो गया वो। आप मेरे को एक बार लॉग इन कीजिएगा फिर। हेलो। हाँ मैडम ठीक है, आप करिए। आप लोग दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। आप मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ आराम से, बिल्कुल सब दिख रहा है।
अब मुझे नहीं दिख रहा है, लाइक मतलब मेरे एंड से मीटिंग बंद हो गई है, तो मैंने फिर से लॉगिन करने का डाला है। आप दोबारा कीजिए एक बार। हाँ, मैंने फिर से लॉगिन करने का डाला है, तो आपको मेरे को लेट इन करना पड़ेगा। ठीक है मैम, आ रहे हैं आप सामने। हाँ, पर है ना कि मुझे वो ब्राउजर नहीं दिख रहा, जैसे मैं मीटिंग से लॉग आउट हो चुकी हूँ, पर वो हैंग इन कर रहा है कहीं पे, वो तो कोई। मैं लॉग आउट शेयर करूँ आपको? हाँ, अभी आप क्या करो, मुझे लॉग आउट कर दो मीटिंग से, मैं फिर से ज्वाइन इन करने की कोशिश करती हूँ, तो उसको लॉग आउट कर ज्वाइन इन करवा दो, ठीक है। मैं अभी ज्वाइन इन करने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, मैं फिर से ज्वाइन इन करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे को लेट इन करना प्लीज। आवाज आ रही है मैडम? हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ ठीक है मैम, दोबारा करूँ लॉग आउट आपको मैं? ठीक है। एक मुझे, हाँ ठीक है, अभी सही है, अभी दिख रहा है सब कुछ, ओके। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। हम टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे, सम टेक्निकल एरर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो नाउ we will move on and we will talk about telemedicine. I hope screen clear आ रहा है, ठीक है। So let's start. uh, आई होप मेरा स्क्रीन भी आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे ना इन्हीं चीजों मैडम की दोबारा बात दोबारा आ रही है। मैडम, आपकी वो स्क्रीन तो दिख रही है, आपका नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। आप दोबारा एक बार लॉग इन करिए। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, मुझे नहीं तो दिख रही है कि मेरी वीडियो आ रही है। अभी आ रही है मेरी वीडियो? नहीं मैम, नहीं। ठीक है, मैं लीव करके वापस से लॉग इन करूँ? हाँ दोबारा कीजिए, हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम ठीक है, आप आ रही हैं आप। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हम टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे, इसमें ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, ठीक है। Now when we talk about AI in health, so this is a very important and it is a very emerging topic. Artificial intelligence in health is not a future technology, it is already deployed at scale in India. And ये एक strategic significance है because AI can make specialist shortage, जो हमारे पास में डॉक्टर्स की shortage है, वो irrelevant कर सकता है। India has 6 radiologists per million people outside cities, and AI can read chest scan, X-ray and instant कर सकता है at scale. So ये जो shortage होता है ना, ये काफी हद तक irrelevant हो जाता है because of AI. तो जब हम चेस्ट एक्सरे एआई की बात करते हैं, तो Cure.ai है मुंबई का, जो रीड करता है चेस्ट एक्सरे फॉर टीबी, कोविड, निमोनिया, कैंसर, कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो तो उसको फ्लैग कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर में वी हैव निरमई, जो बैंगलोर का एआई है।
सो इसमें विच वॉज डेवलप्ड इन बैंगलोर AI मॉड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि थर्मल इमेज से वो AI डिटेक्ट्स ब्रेस्ट कैंसर। इसमें कोई रेडिएशन एंड नॉन इन्वेजिव होता है और ये एक वैन तक में काम कर जाता है। देन वी हैव डायबिटिक रेनोपैथी जिसमें गूगल हेल्थ लाइफ बाय इसकी चीज़ें होती है। सो दे डिडक्ट देयर they can deduct diabetes from renal accuracy and वो एक बार में देख के बता देता है। इट इज डिप्लॉयड इन इंडिया इन 2008 में। एंड देन वी हैव ड्रग रिकवरी विच इज अ मल्टी स्टार्टअप। ये होता है AI मॉडल होता है जिसमें मल्टीपल टीवी मलेरिया ड्रग सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई ये होता है फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड होता है। So now when we talk about web-based education, which is how this is when you talk about web-based education model, this is the economics of education and it has been permanently disrupted. जो marginal cost add होती थी ना एक education के इसमें वो अभी बहुत ज़्यादा लाइक होता ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट इज़ नियर ज़ीरो। सो अब प्रोफेसर जो ओहायो में पढ़ा रहा है उसका कि उसका जो इम्प्लीमेंट होगा मतलब एनीबडी इन इंडिया इन एनी विलेज कोई भी यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। देर आर स्वयं प्लेटफॉर्म्स देर आर अदर ये आई विल शो यू इफ पॉसिबल अगर मेरी स्क्रीन पे देगा तो हार्वर्ड बिजनेस स्टडी का दे हैव लाइक एंटायर यूट्यूब चैनल ऑन द स्क्रीन। आई थिंक पहले हमने एक बारी क्लास में देखा है। सो इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले जिसमें आप भी जा सकते हो मैंने मूक से विच आर मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो कि लो फ्री ऑनलाइन कॉस्ट होता है सेटअप किया गया। देन यू हैव क्यूसेरा यू हैव एडेक्स इंडिया में यू हैव NPTEL। देन यू हैव वहाँ पे एटलीस्ट 3,500 कोर्सेज है 6 मिलियन से ज्यादा लोग इनरोल कर चुके हैं। देन यू हैव सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है ना कि वर्चुअल पेशेंट्स सर्जरी सिमुलेशन क्लिनिकल डिसीजंस ये सारी चीजें होती हैं। सो इसमें क्या होता है मेडिकल कॉलेजेस यूजिंग SIGMAG or health skill training reduces risk for real patients. So community worker training, tablet-based module for ASHA, ANMs and frontline worker in local language होता है। आई गॉट कर्मयोगी ये होता है इसने 2 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करे हैं कोविड प्रोटोकॉल एंड वीक में। सो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल कॉलेज डिजिटल लर्निंग ये होता है। देन दीक्षा इज लाइक 150 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं फ्री डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट के। ठीक है। So during COVID-19, India needs to train every frontline worker on PPE, oxygen therapy, ventilator management, control, सब कुछ simultaneously. And there were approximately 9 lakh ASHA workers alone. So उनको training them physically for one would have taken around अगर 30 के बैच में भी करते तो 17 साल लग जाते। But we got I got Karmyogi did it in weeks on smartphones in local language and interactive modules. So this is not a technology story. This is a strategy जहाँ पे tradition ये वो ये सारा कुछ रिमूव होता है इससे। So when you talk about your different modules तो कितना मुश्किल होता कोविड में इतने लोगों को ट्रेन करना विद द कोविड प्रोटोकॉल। बट आई गॉट कर्मयोगी के इससे ये बहुत ही जल्दी बहुत ही इसमें हुआ है। ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट यूनिट which is your fourth and the last unit which is what other countries did right. Okay,
Okay. So in global strategy, benchmarking means learning from the best. But the trap of copying the surface, for example, the NHS workers, give me a minute. Hold on. So we'll start again at 6, okay?
देखना
डिफाइन क्या कर रहा है? शीट और मेरे को देता हूँ मैं टीम में देता हूँ। So आपका की शीट let's talk about different countries around the world and let's see what could our learnings for this specifically thing would be. So in global strategy, benchmarking means learning the best. The trap is when you copy the surface, like if you talk about NHS working in the UK or you talk about basic tax specifications. What happens here is that an institution of 75 years of political consensus. You cannot copy NHS without this. So you can do is that you extract the underlying principles and you adapt the context of it. So we have three questions for every country we study today. What are the strategy they face? What are their innovation and what are their transferable principles? So when you talk about country case studies, with full strategic analysis, let's talk about US. So when you talk about US as a health market, when you talk about what is happening in US, you will see the problems that you face in India are completely different. Okay, what you face in, so there is a background, there is a context of background, and which is also known as the past or the history. So when you talk about a country like India, there is colonization. Okay? Up when you compare this country with other counterparts who are developed and have never colonized, we will find ourselves in a position that we have not been able to give anything significant. क्योंकि वो कंपैरिजन ही फेयर नहीं है तो वहाँ के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा डिफर करेंगे ओके सो now let me go open that tab for you about USA. So in this presentation, what we have done is that we have focused on the lessons that we can learn in Indian context, talking about health and especially when we talk about IT Delhi, AIMS, collaboration efforts, and we can talk about the other IIT triangle as well. Okay. So every context of this, let's talk about the US market. Okay, we'll talk about the US health strategy. Okay, so health as a market is a commodity. Now coverage led to that employment and pharmaceutical prices. These are unregulated. Innovation here is zero, and it is also a cautionary tale because if you have been hearing me for last 4 or 5 hours, what we see is that this is the context that is there. Ki we had discovered $12,000 per capita income, which is 25 million uninsured life. And this is a life expectancy lower than Cuba. Now, the core problem here that is of market failure structure in the healthcare. Now, privatization without regulation, Orwell's most expensive and most unequal system. So do not replicate what is the US model. Let's regulate private hospital actively. Price transparency is non-negotiable. Then we have the
PM Jan Arogya that must have fund controls. Now, UK में what we do is that pre 1948 health access determined was entirely by income. There, what they do, they had a war era solidarity. And it will make sense. Why am I talking about the countries we cannot replicate at the end of the presentation? But I want you to be with me here. And let's just give it one chance so that we can present more case for what we are discussing right now. Are you there with me, ladies and gentlemen? Great. So we'll just move forward to UK. So pre-1980 health access determined entirely was based on income, war era solidarity and created principal will. Now NHS in 1948, universal, comprehensive, free at point of care and tax funded. Now political commitment of equity sustained across 75 years and 20 plus governmental process, durable and universal coverage. Now universal coverage is a political sustainability even in democracy. The gap in India is that of political will and not a policy design, and I'll prove it to you. Now, when you talk about Singapore, how to fund universal health without creating dependency on or bankruptcy in the state. So we have three systems. We have Medisave, we have Medishield, we have Medifund. These are layered architecture and different mechanism of different health risk. Not a single instrument does everything. So PMJ, we have Medishield equivalent, we have Medisave layer in absent of India, and then we have ABDM infrastructure that we could enable. Now let's talk about Thailand. 70% of population is uninsured in 2001, despite being a huge mid-income country, but scheme 2002 में हुई थी और 70 co-pay per visit. So government covers latest universal coverage on one policy cycle. यहाँ पे क्या है कि primary care investment before hospital investment, small co-pay preventives and overuse. And this is without excluding the poverty. Now this is political ownership at PM level. Now, when we talk about Indian context, we'll see that when we invest in PHSCs before the hospital, so India's PHS network, the Thailand sub-districts, ASHA worker, Thailand village volunteers, all of it goes up. Now we have, examples from the countries that have had a similar experience as us. Okay. By similar experience, I mean colonization, to be very clear. Okay. So now here, when we talk about Cuba, I hope my screen is visible. Yeah. So we will talk about Cuba here. You will question that Cuba in the given context when we are talking about the strategies that are very different when we are talking about collaboration effort between institutions such as ours and the West in the country, or when we are talking about international and national collaborations. The universal coverage with almost Cuba did was that it went through the universal coverage in terms of insurance with no per capita income and isolated from global pharma. So doctor lives in the community, polyclinic in every neighborhood. This is prevention of IS in the system. So community-enabled healthcare outperforms hospital-centric care for primary and preventive needs. Here we have ASHA workers. So potentially the Cuba model works where resourced and respected. Now scale what works. Community cannot be community trust is something that cannot be manufactured. Now we can talk about Bangladesh. So when we talk about Bangladesh in the post, liberation war, no state, there is no infrastructure, and there are billions in poverty. So we barked the world's largest NGO, the school, civic, a microfinance job, civil society in a parallel state. So here is an operational discipline, evidence-driven civil society that can reach where the government cannot.
and if it is strategic, not, and it is not charitable. In India, we have something very similar. We have Pratham. Okay. Pratham, we have Seva for women's health. We have Jan Swasth Abhiyan. We have India's NGO already doing this. So for the need of public-private partnership for no competition, then we can talk about Rwanda. Here, post-genocide in 1944 of no healthcare, and when we talk about anything, you'll see they had a community insurance program based on which what they did was life changing. So it's a war trodden country. Okay, it's a country that is um, something which is suffering phenomenally, and it was practically bleeding at that point of time. Uh, I want you to look at my screen and see all the countries that we are talking about. The story of Rwanda is different because what it has done in a very short. So now when we talk about this, we see कि एक war-ridden countries जहाँ पे एक exceptional number of death हो रहा है, that has implemented certain and it has worked for it in such a way that it has been a phenomenal lesson for others across it. Okay. So in 1994, Rwanda experienced one of the worst humanitarian crisis in the history. 8 लाख लोग मार दिए गए हैं 100 दिन में. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं है. पर कैपिटा इनकम इज 1/3 ऑफ इंडिया. आज 90% हेल्थ कवरेज है. इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 40% होगा समथिंग. सो इनका जो इंश्योरेंस है वो $2 कॉस्ट करता है पर ईयर. इट वर्क्स because of three things India has not fully deployed: simplicity, community trust, and the organizational data. Now, the point I want to bring here by discussing this is very related to the paper that we were talking about few months back. Okay. And the paper of Mr. Vijay Govind Ranjan that we will be sharing from inside from his paper as well, and it is a recommended reading from all of us. Okay. So lesson is brutal. It is clear that binding constraint in India is not money. It is political will, institutional design, and community trust. Every politician who says we cannot afford universal health care, we should look at the data of Rwanda and we should look at the data of Cuba. If they can, we can. And universal health care, we should also look at the data of US, where the healthcare expenditure is maximum. However, returns are out of pocket costs are also highest. हो गया? Okay. So now going forward, what I want is that we pay attention to all that we have discussed right now because we will find some change. Change here is not about what we can do, but it is through the upcoming paper that we are going to discuss. How can we implement all these things? And for that, it is extremely important how it will go ahead and how we'll be adding data. So let's talk about Vijay Gopiranjan. He said something which was phenomenal, and he said that the flow of innovation has changed. For years, it was moving from right to right, right to left. Now it has been changed from different.
I hope my screen is visible to you all. Let me go to that slide एक बारी. Okay. Now, going forward, when we talk about this and we see how the things have changed, this is what I present before you, the reverse innovation. Reverse innovation is where when the paper of Dr. Vijay Govind Ranjan, he talks about how it how reverse innovation in healthcare in 2018 में जो उनका पेपर आया था कि traditional rule of innovation flowing from rich country to poor country is being reversed. Innovation dependent under severe resource constraint is now deploying markets are flowing upward to wealthy market and they solve universal problems better. इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे. अभी हमने अरविंदम आई केयर का एग्जाम्पल देखा. हमें हमें जयपुर फुट का एग्जाम्पल देखे. सो it was Jaipur food was it was designed for squatting, barefoot, uneven terrain, and it was 26 countries including US, UK, and it transferred design, flat pavement, and closed shoes. And then we have strategic principle की constraint driven था. अब दुनिया में we have more it is more affordable and actually more ये. Arvind की जो cost cross subsidiary model है, it is serving rural Tamil Nadu, poor people for free high surgery. Netherlands, Europe hospitals are literally adapting the Arvindam model. Dutch hospital, Mexican eye care chain, same face the no problem, and now they have to look at Madurai for the solutions. When we talk about GMAP, which is 400 ECG, designed for Indians, village workers, battery portable technician operated, rural USA, sub-Saharan desert यहाँ पे ताकि बैटरी पे चलने वाला ECG हो that they can easily use. Now rural Americans have the same problem. No cardiologist in the remote parts of the country. Now they have the same constraint, and also it is easy to move, and it is at the fraction of the cost. ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया रूरल हेल्थ कनेक्टिविटी क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड. Now, WHO recommended a global template for low resource telemedicine. इसमें 10 million consultation in 3 साल हो गया e-संजीवनी में. And this is a comparable system with global scale. Necessity driven innovation faster than abundance. And India's constraint has produced with the world's largest telemedicine system. Now let's talk about UPI. UPI digital payments, these are India's financial inclusion challenges. 1.3 billion people, limited bank branch. Singapore, then Singapore, France, Bhutan, plus 50 plus countries. The world's most scalable digital payment infrastructure were built for the hardest use case. Now designed for India's scale and constraint and get a global adaptation. So same logic are not applying. We have applied to our ABDM in case of health IDs. Now, when we talk about the strategic insight or reverse innovation, so Govind Ranjan argues that innovation designed for resource constrained environment of from three relevant has three inherent advantages. They are simpler, they're easy to scale, they are cheaper, they are more robust. These advantages make them competitive not only in the poor countries but actually globally. So even with the well system per cost pressure, ruler gaps, this is a shortage that has been used to mark the game. So with that, we complete your syllabus. Let's discuss the exam question and let's go to a revision class.
What is the Singapore model? 3M model. Can any element be adopted in India? So the answer could be 3M model is Medisave, which is mandatory personal saving personal account. 9 to 10% of payroll for hospitalization. Medishield is claustrophobic insurance for serious illness beyond Medisave. We have Medifund. Medifund में government net होता है for those who have exhausted Medisave and Medishield. In India, we have PMJ, Medishield, Medisave layer missing, so we could not introduce ABHA-linked health savings via this. So this challenge requires more formal employee base. Difficult is that India का जो 90% है वो informal sector में ही है employment. So now adaptation की बात करते हैं तो voluntary micro saving for government to top up BPL families. There is reverse innovation. Now I ask you what is reverse innovation? Explain to example with health system. So reverse innovation में आप गोविंद रंजन की बात कर सकते हो. Innovation developed in low resource developing country context that they flow upward to wealthy country market. Why constraint driven design are deeper and cheaper. So we can talk about that. मैं जा रहा हूँ कल छुट्टी पे, सुबह से वही कॉल देख लूंगा मैं. So जब हम रिवर्स इनोवेशन की बात करेंगे तो हम गोविंद रंजन एंड हिज पेपर 2018 वाला मेंशन कर सकते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि इनोवेशन डेवलप्ड इन लो रिसोर्सेज एंड हाउ डेवलपिंग कंट्री ने इज इन कॉन्टेक्स्ट कि नाउ there are a constraint driven design products which are cheaper, more robust, more solution and they solve a universal problem. इसमें आप एग्जाम्पल दोगे जयपुर फुट का दे सकते हो जो कि इंडिया के प्रोस्थेटिक फुट के लिए यूज हुआ था क्योंकि इंडियन को रफ सरफेसेस पे चलना पड़ता था नॉट वेस्टर्न पेवमेंट और वो $45 का प्राइस आता है जबकि $12,000 का वेस्टर्न उसका काउंटर पार्ट आता है एंड नाउ इट हैज मोर डिमांड इन 26 कंट्रीज. आप अरविंदम आई केयर का एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे पैरेलल ऑपरेटिंग टेबल में now it was used in India. Now it is a system that is adopted by Dutches and Mexicans. So now the other thing is when you talk about studying here, students in Harvard Business School also here study the same model. So all these Indian innovations are now making it global. Let's have one more example, which is drawing the lessons from the least three countries. Let's and recommend a health financing model for India. ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, इनोवेशन, प्रिंसिपल ऑफ ईच कंट्री. थाईलैंड की बात कर दो, ठीक है. उसके बाद सिंगापुर की बात करो, मेडिशील्ड की बात करो, रवांडा की यू कैन. You have 3 examples here. Going forward, strengthen our community health system of the Thailand model, keeping जो हमारा already आयुष्मान भारत का है layer, and then going forward, we can have the other one. So now तो आप इस तरीके से, आई एम नॉट गिविंग यू कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना, बट आई एम सेइंग कि इस वे में जब आप लिखते हो ना
So the examiner has an idea that you have gone through the entire year and you know what you are talking about. Okay? Okay. So look at this last slide. And now going forward, we will have we'll just discuss the entire unit and we'll wrap up the class in next half an hour. Okay? Any doubt, anyone? Okay, let's start then. Let's try to sum up everything that we have here in this. This is a small poem that I've added to give you a brief here. So now please listen to me very carefully. अभी हम synthesize करेंगे master course framework exams strategy and we will close the class in next half an hour. Okay, please be with me for these 30 minutes. Okay, so we have had a half an hour break pehle. It was supposed to be a 5-hour class and now we'll end half an hour early, so it's like a effectively 4-hour class for you all, and it's a long class, so we have repeated breaks, but now I want your full attention. Is it clear? Great. So every question in this course, short answer or essay, can be constructed in this framework. You have to memorize it and you have to apply it consistently. The diagnosis, the market failure. Is it a public good? Is it a positive externality? Or it's a negative externality? The merit good or the informational asymmetry? State what, why it means the market cannot solve it. Quantify the current gap. Use data. इंडिया का 1.35% एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी जो स्पेंड करते हैं हेल्थ पे 60% of OPP 55% people in poverty 0.5% doctor per 1,000 people 55% illiteracy at under the age of 10 all these data and I have repeated it multiple times ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए एक बार के लिए ठीक है and we have discussed all these in our offline classes in great detail. Okay. Now, at least one number per answer you should write. Identify the model that solves it. Maybe Arvindam, NHS, Thailand, Rwanda, Singapore, AI, name it. Describe the mechanism. Extract the transferable principle. क्या उसमें यूज हो रहा है वॉल्यूम इकोनॉमिक्स कैसे सॉल्व कर रहा है वो मॉडल कर रहा है सॉल्व द क्रॉस सब्सिडरी टास्क शिफ्टिंग community trust, simple design, layered infrastructure. Now state the trade-off honestly, which concerns which corner of the iron triangle, equity, efficiency, or sustainability. Now every solution has a cost. Name it. Strong answer acknowledges its limit. So you have to close what India can do and what political and financial cost it will have. Okay. Now we'll do we'll go through all the key definitions. Okay, so public goods.
सो नाउ जल्दी जल्दी सारे डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे. पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन ड्राइवलर होगा. मार्केट अंडर प्रोवाइड करेगा फ्री राइडर प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करना चाहिए. एक्सटर्नलिटी क्या होता है? जब दो पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं और तीसरा पार्टी जो उसका पार्ट नहीं था उस पर कोई इम्पैक्ट या कॉस्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ बिहार और स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रांजैक्शन किया आपस में. अब पीपल ऑफ बिहार इसमें पार्ट तो नहीं थे, बट क्या हुआ, उनपे एक्सटर्नली कुछ इम्पैक्ट आया. एंड बाकी जो देश के लोग थे उनपे भी इम्पैक्ट आया, क्योंकि जीडीपी का अमाउंट एक सर्टेन है और उनको अगर वहां पे ज्यादा जा रहा है तो बाकी जगहों पे उस हिसाब से जा रहा है. सो इट इज बेसिकली कि दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और जो तीसरी पार्टी जो उसके पार्ट नहीं है उस पर उसका इम्पैक्ट हो जाए. ठीक है. अब दो तरह की होगी एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी. एक्सटर्नलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. आज इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई डील साइन होती है, कोई एमओयू होता है, हम सब पे एक एक्सटर्नलिटी होगी. तो externality as a concept is so crucial, so important. Everything that we study in the social context is actually externality, क्योंकि उसका कुछ impact आएगा on the people जो उसका पार्टी का पार्ट था ही नहीं. ठीक है. सो अब इसको अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते, नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलेंगे. एग्जाम्पल में इसमें क्या कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज देती है. For to correct positive externality, there is certain taxation जो सिर्फ स्मोकिंग पे होता है. Okay, so basically what is here is that, and then there are taxation and regulations that you cannot smoke under hospitals, okay, in public places. So what are these? These are negative externalities and ways to manage it. Then we have merit good. Merit goods are goods जो सोसाइटी मैंडेट करती है कि आपको कंज्यूम करना ही है विदाउट योर विलिंगनेस और प्रेफरेंस टू पे. क्या एग्जाम्पल होगा इसका? हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, बिकॉज you completed your education, I did not pay your fees या कुछ, but when you become a better citizen, me as a society benefits from you when you become a better voter, better educated. Okay, so what is this? This is a merit good. Clear है? So merit good को क्या किया जाता है? मैंडेट किया जाता है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 14. सेम विथ हेल्थ केयर, जब हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की बात करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप फ्री राइडर की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकते हो कि अगर कोई सोचता है कि सब जब करवा ही लेंगे ना तो हमें जरूरत नहीं है इसकी, अगर सब करवा ही लेंगे तो मैं नहीं करवा, तो मेरे अकेले के रहने का, बाकी सारे लोग कर लेंगे. अब यही मेंटालिटी अगर सबकी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो हर्ड इम्यूनिटी कभी डेवलप ही नहीं होगी. सो दिस इज वेयर अगेन रेगुलेशन, मैंडेट, अवेयरनेस, आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएंगे, गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू इट, सो विल कम इनटू द पिक्चर. ओके, so merit goods are goods that the society mandates that you have to consume disregard of your willingness or ability to pay, because इसका एक ओवरऑल बहुत हाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है. सबको वैक्सीन लेना ही है. अब एक दो लोग, अगर आप वैक्सीन ले रहे हो, माई न्यू बॉर्न इन्फेंट जिसको शायद से वैक्सीन नहीं पड़ रही थी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड, सो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो वहां पे हो रही है. क्लियर है? ओके. Another very important concept is that of iron triangle. Okay, iron triangle हमने multiple times discuss करा है, hope आपको याद होगा. इक्विटी, इफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी. हर मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं ना, आयरन ट्रायंगल के एक कॉर्नर को पकड़ के लेने की कोशिश करता है. इंडिया में हमने क्या करा है कि अभी तक यू वोंट सी कि किसी एक कॉर्नर पे वी हैव कमिटेड. सो जब हम बात करते हैं इक्विटी की, यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रहे हैं, इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट में कितना जल्दी कितना एफिशिएंटली काम हो. सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई हमको चैरिटी लेने में जाना नहीं है, मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, आई एम मेकिंग माई ओन प्रॉफिट एंड आई एम सस्टेनेबल. मैं अपना खुद से ग्रोथ कर, जैसे अरविंदा माई केयर की बात थी, नारायण हृदयालय की बात थी, एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, इक्विटी पे फोकस कर रहा है. सो एवरी हेल्थ सिस्टम पिक्स वन एंड sacrifices one. Now let's talk about a moral hazard. What is a moral hazard? आपका बिहेवियर एज अ कंज्यूमर चेंज हो जाता है.
जब कोई और उसका कॉस्ट बेयर करता है, एंड दैट इज नोन एज अ मोरल हजार्ड। एग्जाम्पल क्या आप बता सकते हो? जब इंश्योरेंस के अंदर, जब राष्ट्र बीमा योजना के अंदर when they were not mandated to pay for the C sections, तो क्या होता था? ओवर बिलिंग होता था। कस्टमर को पता है मुझे पैसे नहीं देना है, सरकार दे रही है, तो ठीक है सी सेक्शन करवा देते हैं। प्रॉफिट हॉस्पिटल को भी हो रहा है, वो बिलिंग 5 गुना ज्यादा बढ़ गई नॉर्मल यूज से। उन हॉस्पिटल्स में डेटा इतना स्वीट हो गया कि 60 टाइम्स मोर, 60% मोर सी सेक्शन होते थे और कम्पेयर टू रेगुलर हॉस्पिटल। क्योंकि कॉस्ट तो गवर्नमेंट में करे, तो पेशेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, मेरे को पैसे नहीं लग रहे, अब सर्जरी की जरूरत है, कर दो। अब एज अ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जरूरत थी सही में या नहीं थी? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशनल असिमेट्री। व्हाट इज इंफॉर्मेशनल असिमेट्री? इन सर्टन रिलेशनशिप एक को हमेशा आपसे ज्यादा पता होगा, दैट इज इंफॉर्मेशनल असिमेट्री। जैसे डॉक्टर और पेशेंट है, डॉक्टर को वे में इंफॉर्मेशन है देन the patient. This is the problem of information asymmetry. And we have also discussed the problem of free rider. उसका एक एग्जांपल क्या होता है? टिकटलेस ट्रैवलिंग। कि ट्रेन तो जा रही है, सबने पैसे दिए हैं, जिसने पैसे नहीं दिए वो भी दे कैन आल्सो गो, बट वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐड नहीं कर रहे। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन। ओनली हाई रिस्क इंडिविजुअल इंश्योरेंस स्कीम के लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा पूल बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसके लिए हमें मैंडेटरी यूनिवर्सल एनरोलमेंट की जरूरत है। सोसाइटी में कुछ लोग हेल्थी है, कुछ लोग बीमार है। अब जो बीमार है भाई, वो तो कुछ कल सीरियस हो सकता है, मैं तो इंश्योरेंस रख लेता हूँ, मैं तो हेल्थ बीमा, वो कोई जरूरत नहीं इंश्योरेंस की। अब जो आपका इंश्योरेंस पूल होगा ना, वो ज्यादा बीमार लोगों का होगा, ज्यादा हेल्थ होगा। क्लियर है? दैट इज एडवर्स सिलेक्शन। अब आयुष्मान भारत ने इसको काउंटर कैसे किया? मुनासिब पार्ट है ऑटो सिलेक्शन। If you come under, last bottom 40% of India under that data, then you naturally become a part of it. Okay. Now we talk about cross subsidiary, where the paying patient fund, free patient. This is the Arvindam model, and this is a mission. This is a social mission, financial sustainable. Okay. Let's talk about task shifting. So task shifting is to delegate the least expensive, least sufficiently trained person, reduce the cost without reducing the quality. Then we have frugal innovation, remove cost without removing care, design for the actual user and the actual context. जिसको जरूरत है उसको ये करना है। प्रहलाद की बात करोगे, गोविंद रंजन सर की भी आप बात कर सकते हो, उसी के प्रहलाद की भी बात कर सकते हो। मैनेजमेंट में हमने उसी के प्रहलाद की बात बहुत बड़ी बड़ी होगी। कोर कंपटीशन, कोर कॉम्पिटेंसी याद है? मैगी 2 मिनट में अभी बनाती, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सी के प्रहलाद। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स इनोवेशन। बट फ्रूगल इनोवेशन में आई थिंक रिवर्स इनोवेशन में गोविंद रंजन का एग्जांपल इज बेटर। फ्रूगल इनोवेशन में यू कैन कोट प्रहलाद ओनली। सो गोविंद रंजन सेज कि इनोवेशन रिसोर्स ओरिजिन, तो जो हमारे कॉन्स्ट्रेन थे उनको ओवरकम करने के लिए में ना हमने ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, और अब वेस्टर्न कंट्रीज को उसकी जरूरत है। तो उसमें फ्लो ऑफ इनोवेशन थे कि सालों जितने भी प्रोडक्ट इनोवेशन ये होते थे वो वेस्ट में बनते थे, एंड देन वो इंडिया में और अफ्रीका में ट्रांसफर होते थे और लोग उसको खरीदते थे। ठीक है, हम उसको इम्पोर्ट करते थे। दे वुड गेट इट, डेवलप इट, R&D करेंगे और पेटेंट करेंगे। अब क्या हो रहा है कि इन मदुराई, इन नरोबी, इन दीज पार्ट्स ऑफ ये देयर आर इनोवेशंस डेवलप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि हमारे पास वो बड़ा हार्ट का ECG का रखने का वो नहीं था, हमने बैटरी पे डेवलप कर लिया कि बिहार के किसी गांव में बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी वो काम करेगा। कार्डियक सर्जन की जरूरत नहीं है, एक टेक्नीशियन भी उसको चला सकता है। वो भी हमारा इनोवेशन है, हमारे रूट के अकॉर्डिंग है। बट अब उस ECG मशीन की रिक्वायरमेंट US में बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो मूवेबल है एंड कम्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। जयपुर फुट की बात हुई, जयपुर फुट $45 में आ जाता है। उसमें क्या है? इंडियन पेवमेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न फूड्स होते थे उन सब इंडियन पेवमेंट में, यहाँ पे हमारे रूखा जमीन है, कहीं पे कच्चा है, कहीं पे मिट्टी है, पत्थर है, चलना मुश्किल होता था। इंडियन स्क्वाट करते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं।
तो अभी जयपुर फूड की डिमांड उस इनोवेशन से दुनिया में ज्यादा है, तो दैट इज रिवर्स इनोवेशन। देन यू हैव पीपीपी। व्हाट इज पीपीपी? सो गोविंद रंजन सर ने क्या क्या था कि द फ्लो ऑफ इनोवेशन हैज चेंज्ड। अब चीजें यूएस से इंडिया नहीं आ रही, इंडिया से अफ्रीका से यूएस उधर जा रही। सो जो पहले था ना कि द ग्रेट इनोवेशन जो जेनेवा और स्विट्जरलैंड इसमें होते थे, नाउ इट इज हैपनिंग इन Madurai, Nairobi, and small countries in the world to solve our problems. And now these are those very efficient कि दुनिया भर में उसको लेके जाया जा रहा है. PM Jai is actually 5 lakh cover for the bottom 40% of India, 55 million world's largest government health scheme. ये आप mention करोगे हमारे देश का world's largest government health insurance scheme. अब संजीवनी क्या है? कर्नाटका कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, जो कि 10 मंथ के लिए 3.5 मेंबर्स सेल्फ फंडेड है और प्रीमियम वायबल है। ई संजीवनी इज इंडियाज नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। 10 मिलियन कंसल्टेशंस होता है, हब एंड स्पोक होता है, हब एंड spoke, and patients don't have to travel but only the information does. Ayushman Bharat Digital Mission, it's a unique health ID for every Indian, and it is a infrastructure layer enabling digital cost. And now we have योर एग्जाम के लिए आई हैव सम टिप्स फॉर योर एग्जाम। ओके, जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे उसमें आप एक प्रिसाइज डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल, ठीक है, 2 पैराग्राफ, मोर सेंटेंस। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में डिफाइन, एक्सप्लेन, 1 एग्जाम्पल, 1 इम्प्लीमेशन एंड 1 इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन आपको फिर भी करना ही। लॉन्ग आंसर में होगा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, 3 to 4 समेटिव पॉइंट्स होंगे, एग्जाम्पल ऑफ ईच होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा, एंड यू विल हैव कंक्लूजन। केस स्टडी और ऐसे में क्या होगा? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, फ्रेमवर्क, मल्टीपल एग्जाम्पल होंगे, एक्सप्लिसिट ट्रेड ऑफ होगा, कॉन्सेंट्रेट, रिकमेंडेशन विद जस्टिफिकेशन। अब इसमें आपको जेनरिक से ज्यादा मेक इट क्लियर, रिकमेंडेशंस दो जो हमने पढ़ा है, कोड डेटा, कोड नंबर, एंड वो होता। नाउ this is the core strategy that you should be: definition, evidence, implication, and always, every time. ठीक है, this is clear? चलो, let's revise again. I know आप थक गए हो, मैं भी थक गई हूँ, but we have to continue. Okay, सबसे पहले you have the iron triangle. Iron triangle में you have equity, efficiency, sustainability. Every system picks the two. यूएस ने एफिशिएंसी लिया है, इक्विटी सैक्रिफाइस की है। यूके ने इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी ली है, रवांडा ने भी सस्टेनेबिलिटी इक्विटी ली है। इंडिया भी डिसाइड कर रहा है, नॉट होल्ड वन कॉपी। ओके,
What are public good, non-excludable and non-rival? लाइट हाउस हो गया और आपका हर्ड इम्यूनिटी फॉर वैक्सीनेशन हो गया. एक्सटर्नैलिटी क्या है? benefits spread to the third party who did not pay for it. Cost negative externality क्या है? When cost falls on the third party who did not choose it. For example, vaccination, herd immunity सबको protect करेगा. Education, your literacy will make you a better voter, better neighbor. Smoking, your cigarette fills my lungs. Untreated TB infection, more your infection can create more infection. So गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्स कैसे करती है? पॉजिटिव वाले पे गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस एंड नेगेटिव वालों पे देयर आर टैक्सेशन, देयर आर regulations to control. What is very good? So externalities, two party are having a transition, there is a cost or benefit to the other party. Then we have merit goods. Merit goods are society says that you have it regardless of your preference or ability to pay. So government overrides that market because individual undervalue the goods ignorance and so society mandates that you should use it. Primary education or healthcare is the example. 1.35% of GDP on public health, 60% spent on health out of pocket, 55 million pushed into poverty by illness every year 0.7% of doctors per thousand. WHO minimum 0.1 recommended that 55% of 10-year-old cannot read a paragraph. Public versus these are the numbers that are serving. And to solve it, what we have different models, and one among them is public-private versus PPP. Public में universal सबको है, private में access selective है, PPP में universal mandate plus private delivery. Quality often poor, unfunded. Private में क्या होगा? At the top, tertiary at the bottom. इसमें क्या होगा कि private efficiency is